we discussed about basically युक्ताहार विहारस्य युक्त कर्मचेष्टस्य युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः. So we discussed that a yogi, if he wants to progress in spiritual life, he must have regulated eating, regulated mating, regulated sleeping, regulated roaming around the world, right? If he thinks that I can do it at any time, at any moment, then it will be yoga bhavati dukkha, that yoga will not remove his miseries, right? ये हम लोगों ने समझा था. So ये बहुत ही important concept है जो भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं. So just like we see around the world, it is so much regulated. We get the water from water box, so it must be coming here regularly. अगर उल्टे सीधे समय पे आना शुरू हो जाएगा, then there will be so much chaos in the life of the people. Then we expect from the government that they should supply the electricity regularly. They should give any other facility regularly. In fact, we expect that regularly we should get the grains. Regularly we should get any kind of facility. It may be trains, it may be water, it may be electricity, or whatever it is. अगर रेगुलेशन हट जाएगा और अपने मन मर्जी से हर व्यक्ति चलना शुरू कर देगा, मुझे जब चाहूँ मैं तब काम पे आऊँगा, ट्रैफिक पुलिस वाला सोचेगा जब मैं चाहूँ तब काम पे आऊँगा, पुलिस वाले लोग सोचेंगे जब हम चाहे तब काम पे, स्टूडेंट सोचेगा जब मेरी मर्जी होगी तब मैं स्कूल जाऊँगा, कॉलेज जाऊँगा. So what will be happening? It will create a chaos in the life of that person and in the life of others as well, right? So everywhere you see, wherever happiness is there, there regulation is there. As soon as you remove the regulation, you remove that like regulated lifestyle, then life will be in trouble of that person. We can see that directly proportional. No regulation, no happiness, right? So it's a very important formula which is being told by Krishna here in Bhagavad Gita, 17th shloka, 6th chapter. बहुत ही important है. कोई व्यक्ति अपने गुस्से को रेगुलेट नहीं कर पाता है तो वो सामने वाले पर ऐसे चिल्लाना शुरू कर देगा, पागलों के जैसा चिल्लाना शुरू कर देगा. कोई व्यक्ति अपने लस्ट को रेगुलेट नहीं कर पाता है तो वो पागलों के जैसा बिहेव करना शुरू कर देगा. He'll become crazy fellow, right? Criminal. Why he becomes a criminal? Because he is not able to follow the rules and regulations given by the government. So just like a tennis player, he has to regulate his bat. Cricket player also has to learn how to regulate the bat. Basketball player has to learn how to regulate the basketball. When you are driving a car, you have to learn how to regulate the steering or brakes, accelerator, gear, right? Every step of your life, you have to be regulated. That's it. A businessman is there. He has to go on time to attend his business, like maybe around 8 o'clock, 9 o'clock in the morning, 10 o'clock in the morning. Then he will come back around 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock in the night. He cannot be whimsically goes at any time. Then that is government department, and we know how the government departments are running. कभी भी जाएंगे, कभी भी आएंगे, then है ना, फिर पता नहीं कैसे चलती है वो गाड़ी. Completely chaos there. So here in Jodhpur, actually we are running after some important things, and we have to deal with some government departments here. There are some government departments who are working okay, but there are some other government departments where there are no regulations. Then we have to put our so much headache, so much head, and there is no outcome also from there. अब इतना आप देख रहे हैं कि सोसाइटी में जब रेगुलेशंस चाहिए, अगर हम सोसाइटी को खुश बनाना चाहते हैं तो हमारी लाइफ में रेगुलेशंस कैसे नहीं होगा? इंडिविजुअल की लाइफ में भी रेगुलेशंस होने चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस, regulated lifestyle must be there. And if you don't accept that regulated lifestyle, then be ready for the consequences of unregulated lifestyle.
So just like people, they fill their petrol tank in a car, otherwise है ना, कार कभी भी बीच में रुक सकती है और उसको जो है उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ते हैं। उसी तरीके से हमारी लाइफ में भी हमने अगर है ना पहले से ही केयर केयर नहीं किया कि मेरे साथ में जो है आगे कुछ भी हो सकता है, वो रेगुलेशंस हमारी लाइफ में एक अलग तरीके से जो भगवत गीता में बता रखे हैं, और उन रेगुलेशंस को अगर हम फॉलो नहीं करेंगे, डेफिनेटली हमारी भी गाड़ी जो है बीच बीच में कहीं ना कहीं रुकती रहेगी, धक्का मार के हमको गाड़ी को चलाना पड़ेगा। And that same thing is happening everywhere in the life of people. Even not only this country, not only this, you can say Asia or Europe. In fact, all the continents like that. Everywhere, even you are living inside the jungle. If you don't follow the regulation, then you cannot become happy, right? So Krishna is giving such a wonderful thing. Now I'll just open that shloka so that you can understand why I'm talking about it so much today. पिछला जो श्लोक हम लोगों ने डिस्कस किया था, 17वां श्लोक, उसमें भगवान अर्जुन के ऊपर यही बता रहे हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः. Who is temperate in his habits of eating, sleeping, working, recreation can mitigate all material pains by practicing the yoga system. अगर हम में से कोई भी खुश होना चाहता है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर हम में से कोई भी आदमी खुश होना चाहता है, every one of us wants to become happy, right? Then he must be having regulation in eating. Not कि जितना मन किया उतना खा लिया, कि खाया ही नहीं, भाग रहे दौड़ रहे सुबह से लेकर रात तक काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें अपना खाना भूल गए. Then योगो भवति दुःखः. Then there will be so much material pain in your life. इतना ज्यादा जीवन में दुख हो जाएगा, आप उसको हैंडल ही नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है हैंडल करना, क्योंकि ये फॉर्मूला भगवान दे रहे हैं जो कि पूरी सृष्टि के मालिक है. जस्ट लाइक इफ यू रन अ लैपटॉप पर्सन इज टेलिंग, भैया आप अगर डिलीट का बटन दबाएंगे तो डिलीट ही दबेगा, यहाँ से कुछ प्रिंट नहीं हो सकता है. बैक स्पेस का बटन दबाएंगे तो बैक स्पेस होगा, आप इससे कुछ और क्रिएटिव नहीं कर सकते. स्पेस बटन दबाएंगे तो स्पेस ही होगा, यहाँ पे भी प्रिंट नहीं हो सकता. कोई प्रिंट वाला बटन दबाएंगे, ए दबाएंगे, एस दबाएंगे, टी दबाएंगे, तो उससे PQR नहीं आ जाएगा. तो वो हमको ठीक से बता सकता है और उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा. ऐसे कृष्णा ने यहाँ पर हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए हैं, that one has to be regulated in his habit of eating. So eating के बारे में हम 3rd चैप्टर में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं डीपली, बट शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं, one must eat only and only कृष्ण प्रसादम, that to fill his belly, ना अपने पेट को भरने के लिए, ताकि आपका शरीर ठीक ठाक चलता रहे. ऐसा नहीं गले तक भर लिया, पर केवल भगवान को भोग लगाया हुआ ही हमें प्रसाद ग्रहण करना है. ऐसा नहीं कहीं भी मन किया, कहीं पे भी कुछ चाट पकौड़े का ठेला देखा एंड शुरू हो गए. So that is actually, that will cause so much problem in your life. Sleeping, sometimes we sleep too much and sometimes we don't sleep at all. Then both the cases you will come in tamoguna, and as soon as you are in tamoguna, then your work will get affected. Either you will work too much or you will not work at all, and then again in the night you will have problem, less sleep, or you will sleep more in the morning time. So completely cycle goes topsy-turvy, you see. And recreation, person feel very weak if he is involved too much in recreation. So भगवान कृष्ण जो है बता रहे हैं that there are some people in fact who live 90 years, 95 years. If you ask them, very regulated lifestyle, they have very regulated lifestyle. Nowadays people are you can see they are looking like what do you say, old people, even at the age of 30, 35, 25. Why is it so? They're eating junk food, they are sleeping late in the night,
they are है ना, in live-in relationships, then taking intoxicants, alcoholic drinks, etc. And no, मतलब उठने का, सोने का, खाने का, पीने का कुछ भी ठीक से डिसाइडेड नहीं. So such a person, he will be having so much tension in his life. And if you will tell him, please follow Krishna consciousness, that person mostly he will not able to follow. Okay, तो हमें अगर चाहिए, so this is first thing, regulation. This is first thing, है ना. इसलिए हम हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करने की बोलते हैं. हम लोगों ने पिछला 2-3 क्लास पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, why is it important to control our senses. So now Prabhupada tells that becoming Krishna consciousness is something very extraordinary thing. In fact, you need not to become Krishna conscious also. You just become sattvic. Sattvic fellow only can become disciplined. है ना. कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा सात्विक है तो वो डिसिप्लिन को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत आसानी से फॉलो कर सकता है. And when you become शुद्ध सात्विक, you become Krishna conscious. आपको समझना होगा, एक होता है तमोगुण, एक होता है रजोगुण, एक होता है सतोगुण. और सतोगुण से भी ऊपर होता है शुद्ध सतोगुण, जो कि हम लोग फॉलो करते हैं. लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति केवल सात्विक भी है, there are so many people, there are so many, you can see पहलवान है और क्रिकेटर्स हैं and so many other people, they are at least regulated in their lifestyle of eating. Coach will tell them, don't eat these things, eat only these things, get up early in the morning, sleep at time in the night, right? Just like sometime I give example. अभी कुछ साल, 1.5 साल पहले की बात है, maybe when Indian cricket team, they were in finals of I think T20 or something like that. So but they lost the match because of their crazy you can say उनकी जो हरकतें थी वो, उसकी वजह से वो मैच लूज कर दिए, right? So because they were not temperate in all these kind of things. In fact, I remember when I was preparing for IIT JEE, so I was very much regulated. So then it became very easy for me to remember the things, to solve the questions and answers. Too much actually. So, Prabhupada also tells like that, Suyatrita. In fact, I have observed some boys, their hair, they grow white too early. In fact, at the age of 20 only, 21 only. This is because of generally they are sleeping late in the night and getting up late in the morning, in fact. So because of irregulated things, in fact your body is also not responding properly. लेकिन वही अगर आप जो है 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए आपको कोई भी और आपको दवाई वगैरह लेने की जरूरत नहीं है. अगर आप प्रॉपरली खाना खाएंगे, not too much junk food, not too much oil, regulated oil is also good but not too much, and like that proper ingredients if you are using, then your health will be something else. Your face will have a different shine, your hairs will be blackish or mostly dense, you can say dark blackish, black color possibly. So and it means you are healthy. हमको फैशन नहीं करना है, it means you are healthy fellow, right? And then following Krishna consciousness becomes easy for such a fellow. हालांकि तमोगुण रजोगुण वाले व्यक्ति भी कृष्णा कॉन्शियसनेस को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इट बिकम्स डिफिकल्ट. जस्ट लाइक फॉर अ पर्सन हु इज sick, it's difficult for him to participate in any kind of competitive things, maybe games or maybe some kind of competitive examination. Although he can fight, he can perform well, but it becomes difficult for him. उसी तरीके से रजोगुण तमोगुण के व्यक्ति के लिए योग करना, अष्टांग योग हो चाहे भक्ति योग हो, ये जनरली बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है. So that's why it is recommended that we should follow those rules and regulations which are told to us by our spiritual master. Srila Prabhupada is just demanding that, not like you go to Himalayas and then follow something. He's simply telling that get up early in the morning, right? सुबह जल्दी उठो, रात को जल्दी सो जाओ, अपना पूरा
चैंटिंग करो, 16 राउंड को चैंटिंग करो, अच्छे से बोल बोल के, ध्यान से सुन के, एंड ईट ओनली कृष्ण प्रसाद, and follow 4 regulated principles, no meditating, no intoxication, no receipt of and grumbling. And हम लोग को कई बार डिस्कस किया चुका है, स्त्री शूना and सूना and all those things we have discussed nicely. So ये तो बात हुआ सात्विक होने का। अगर हम सात्विक रहते हैं इस तरीके से, और फिर उसके बाद में हम लोग आसानी से हमारे खाने पे कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे सोने पे कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे वर्किंग आवर्स पे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज पे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप तामसिक हो और उसके बाद में आप इन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करो, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर सच अ फेलो। एंड सिंस दीस थिंग्स आर नॉट कंट्रोल्ड, योगो भवति दुःखा, yoga cannot be actually practiced perfectly, right? So now there may be one question, प्रभु रेगुलेशंस तो हम लोग जैसे कि बात कर रहे हैं, मोरलिस्ट की लाइफ में भी होता है, मोरलिस्ट की लाइफ में भी होता है, और कर्मियों की लाइफ में भी रहता है, और भक्ति योगी की लाइफ में भी होता है। तो योगी और कर्मी के जो डिसिप्लिन में, उसमें क्या अंतर है? कैन एनीवन टेल मी? जो डिसिप्लिन रेगुलेशंस हम फॉलो करते हैं वो भी फॉलो करते हैं, फिर अंतर ही क्या रह गया? एनीवन? I want response from you all here. कोई बताना चाहेगा हमारे और कर्मियों के उसमें क्या अंतर रहता है जनरली? हाँ भुवन बताइए। हरे कृष्णा प्रभु धन्यवाद। धन्यवाद। प्रभु एक्चुअली वो करते हैं मतलब बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के, वो अपने अपने बेसिस पे ट्राई करते हैं पूरा कंट्रोल करने का, लेकिन जो अपन भक्ति योग में करते हैं वो कृष्णा के सर्विस के थ्रू करते हैं। वेरी गुड पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने कि हम लोग जो रेगुलेशन, हालांकि इसका आंसर एक और भी है जो मैं आपको बताऊंगा, कि हम लोग जो रेगुलेशन फॉलो करते हैं उनके रेगुलेशन के अंदर है, वो खुद की ताकत के बल पे अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और हम लोग जो है कृष्णा की ताकत पे भरोसा करके, गुरु की ताकत पे भरोसा करके, उसके बेसिस पे अपने आप को कंट्रोल करते हैं। इसलिए इट बिकम सो इजी। प्रभुपाद गिव्स एग्जांपल ऑफ विश्वामित्र मुनि, जो एक अष्टांग योगी थे। ही गॉट फेल्ड बिकॉज he was trying to control his senses by his own endeavors, by his own strength. लेकिन वहीं पर हरदास ठाकुर के पास में भी एक प्रोस्टिट्यूट आती है, and she tried to tease Haridas Thakur so many times, even 3 days continuously every night, but Haridas Thakur could not be entangled into her this thing. So because reason was simply Haridas Thakur was dependent on Krishna, and here Vishwamitra Muni was somewhere in the beginning stage, he was dependent on himself. तो कई बार हम लोग बहुत डिटरमाइंड हो जाते हैं कि नो, आई विल नॉट डू दिस एक्टिविटी एनी मोर। देन आई टेल देम प्लीज डोंट डू दिस काइंड ऑफ प्रॉमिसेस टू योरसेल्फ। आप वो प्रॉमिस को फुलफिल नहीं कर पाएंगे, देन विल बिकम फ्रस्ट्रेटेड। बेटर यू प्रे टू कृष्णा, you chant more number of rounds, you get up early in the morning, read every day the books of Srila Prabhupada, guaranteed आपकी सेंसेस अपने आप कंट्रोल हो जाएंगे। बहुत आसान तरीका है सेंसेस को कंट्रोल करने का, रेगुलेटेड लाइफस्टाइल को जीने का, राइट? प्रभुपाद जी जो है हमको ज्यादा फोकस सुबह जल्दी उठने पे, रात में जल्दी सोने पे, या कम खाने पे, या कम सोने पे, इन सब में नहीं बोलते हैं। वहाँ पे प्रभुपाद किस पे ज्यादा फोकस कराते हैं? यू चैंट नाइसली, योर नंबर ऑफ राउंड्स, यू रीड एवरी डे माय बुक्स, यू ईट ओनली कृष्ण प्रसाद। इन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस कराते हैं। नेचुरली कृष्णा हेल्प सच अ पर्सन एंड यू easily becomes detached from all materialistic things. और वहां पर हम लोग खुद की ताकत पे भरोसा करके, नहीं मैं ये कर दूंगा, मैं कर दूंगा, then 100% fall down is sure. You see, so this was one wonderful thing which was told by Bhuvan, and one more answer is in chat box. हम कृष्णा के लिए करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो, एंड लोग अपनी खुशी के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। One more answer is here. Just will read. When the yogi by practice of yoga disciplines
his mental activities and becomes situated in transcendence, devoid of all material desires, is said to have attained yoga. Why it becomes easy for a devotee? Because since he's following discipline, so automatically yoga becomes easy for him. He is said to attend yoga. Yoga means getting connected with Krishna. मतलब वो कृष्णा के साथ connect हो जाता है. So any discipline you follow in the material world, and that too spiritual discipline, you becomes connected with Krishna. Okay. So now, how a yogi's discipline is different from a karmi's discipline. Who is a karmi? Karmi means उसका केवल सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, खुद के लिए काम करना है, मेहनत करना है. वो बहुत मेहनती है लेकिन खुद के लिए करना चाहता है. तो one more place Prabhupada explains, a yogi is a fellow, is a person, is a guy who is ready to part his you can say his share with Krishna. Only such a person can become. Yoga means connect. Everything should become yoga. Your lifestyle should become yoga. Your sleeping should become yoga. Your eating should become yoga. Your roaming around should become yoga. Your job should become yoga. Your salary should become a yoga, right? Like that's all your activity should become yoga, not just 21st June yoga international recording. Yoga means connecting yourself with Krishna. Means हर चीज कृष्ण के लिए करना है. सिंपल फॉर्मूला. इट्स अ सिंपल फॉर्मूला. तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा हिंट दिया हुआ है. इस केस में होता क्या है, व्यक्ति जो है वो कैसे अलग है एक कर्मी से. भक्त एक कर्मी से कैसे अलग है, जो बहुत बड़ा अचीवमेंट है हर किसी के लिए. तो यहाँ पर रूपा जी पर्पट को बहुत सुंदर एक्सप्लेन कर रहे हैं. दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू रीड द पर्पट्स वेरी डीपली. Activities of the yogi are distinguished from that of an ordinary person. तो योगी और एक ऑर्डिनरी पर्सन के बीच में क्या डिफरेंस होता है उनके रेगुलेशंस में? बाय हिज कैरेक्टरिस्टिक cessation from all kinds of material desires, of which sex is the chief. So now here is a very important difference. Yogi will also follow the discipline, regulations, and karmi will also follow the rules and regulations and discipline. But karmi will do for enjoying the sex life, means enjoying any material desire, out of which the sex is the chief desire. And this devotee, he will be doing it for actually you can say for Krishna, as Akash had written in the message. So and now जब कोई योगी इतना ज्यादा डिसिप्लिन हो जाता है, डिसिप्लिन so much in that in the activities of mind that he can no longer be disturbed. You see, that is so beautiful. He can no longer be disturbed by any kind of material desire. Children, we are so much disturbed because of material desire. We think that I will earn this much money, I'll become more happy. But as much as you will earn money, that much you'll become disturbed. This is the formula which is being given by Krishna. जितना आप कर्म का फल का त्याग करोगे उतना ही खुश होते चले जाओगे. जितना आप कर्म के फल से और अटैच हो जाओगे, और ज्यादा आपको फल चाहिएगा, you will become that much disturbed. So, and now this perfectional stage, ये जो perfectional stage है इसमें आप कोई disturbance आते नहीं. So I told, आप याद रखिएगा, disturbance is coming because of रजोगुण and तमोगुण, क्योंकि आप कृष्णा कॉन्शियस नहीं है. It's a kind of punishment for a living entity. लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति सात्विक हो जाए, इनफैक्ट लीव द कृष्णा कॉन्शियसनेस, सात्विक भी अगर हो जाएगा, काफी हद तक डिस्टर्बेंस खत्म हो जाएंगे उसके, काफी हद तक उसकी लाइफ से डिस्टर्बेंस खत्म हो जाएंगे. सो मेनी पीपल वी सी अराउंड, जिम जाते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, रात को जल्दी सोते हैं, रेगुलेटेड आहार है, पर इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, कभी भी रजोगुण तमोगुण में जा सकते हैं, क्योंकि रजोगुण तमोगुण सतोगुण के अंदर मिक्स होता है. जब रजोगुण तमोगुण पूरा जीरो हो जाता है, देन इट इज कॉल्ड अ शुद्ध सत्व. So I have seen many boys like that.
somehow that they were doing nicely, following Krishna consciousness, but somehow other Maya pulled them, and they are not able to follow Krishna consciousness anymore, because they again went back into रजोगुण तमोगुण। लेकिन जैसे सतोगुण में थे उस वक्त बहुत अच्छे से कर रहे थे, तो इसके लिए सतोगुण वाली स्थिति भी डेंजरस है। सतोगुण वाली जो स्थिति है वो भी क्या है, डेंजरस है। वन शुड बी केयरफुल। जस्ट मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं 2 माला जप कर रहा हूँ, मैं 5 माला जप कर रहा हूँ, मैं 16 माला जप कर रहा हूँ, मैं थोड़ा रीडिंग कर ले रहा हूँ, थोड़ा चैंटिंग कर ले रहा हूँ, थोड़ा लेक्चर भी सुन लेता हूँ, भगवान को थोड़ा प्रसाद, वो भी स्थिति खतरनाक है। कभी भी आप ग्लाइड डाउन कर सकते हैं रजोगुण तमोगुण। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब तक हमें हाईएस्ट योगा रूढ़ वाली स्टेज तक ना पहुंच जाए, ऑलवेज यू आर थिंकिंग अबाउट कृष्णा, एक्टिविटी यू आर डूइंग फॉर कृष्णा, naturally you are attracted towards Krishna, spontaneously you are attracted towards Krishna, you should not stop yourself, you should not stop yourself, right? So it's an important understanding which we have discussed today, that if you want to become happy, then be disciplined, and discipline not karmi discipline. Krishna is not talking about that karmi discipline, ये भी ध्यान रखिएगा। योगा, कृष्णा बोल रहे हैं जो भी करना है योगा के लिए करना है, मतलब कृष्णा के लिए करना है। So if that regulation is there, then you will be happy. ये मेटल का लाइफ का जो डिसिप्लिन है, it will make you happy of course, but for some time, maybe 10 days, 20 days, 1 year, 2 year, बीच बीच में दुख आते रहेंगे। तो कृष्णा वो वाला डिसिप्लिन हमको नहीं बता रहे। कृष्णा कौन सा डिसिप्लिन बता रहे हैं? You can write down in your chat box. कौन सा डिसिप्लिन बोल रहे हैं कृष्णा यहाँ पर? Which discipline Krishna is talking about? Yes. किसी का रेस्पॉन्स नहीं आया, लगता है सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं पैरेलली। यस, कृष्णा कौन से डिसिप्लिन का बात कर रहे हैं? टाइप इन चैट बॉक्स। ओके, कुणाल, हरे कृष्णा, बताइए कृष्णा कौन से डिसिप्लिन का बात कर रहे हैं? हरे कृष्णा कुणाल। कुणाल सो रहा है लगता है। यस बीरबल बताइए। हेलो, हाँ हरे कृष्णा हाँ, प्रभु। हरे दंडवत कृष्णा, प्रणाम धन्यवाद। प्रभु। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है भगवत गीता में, जो कृष्ण बताते हैं, मतलब कैसे खाना है, क्या मतलब पीना है, उस मतलब वो जो है ना वही फॉलो करना है। गुरु के जो इंस्ट्रक्शन है उनको सही से फॉलो करना है। तो वही अभी आप कह रहे थे, युक्तर आहार वीरस्य, मतलब जो अधिक नहीं खाना, अधिक नहीं सोना। और जैसे प्रभुपाद जी जिन बातों पे जोर देते हैं कि है ना, मंगला पे आना जल्दी, और अच्छे से चैंटिंग करना, और मतलब सिर्फ प्रसाद ही खाना, ये चीजें और इन चीजों को रेगुलर रखना जरूरी है। ओके, लेकिन कर्मी भी करते हैं ना, सुबह जल्दी उठना, केवल शाकाहारी भोजन करना, बहुत ज्यादा वो अपने लिए, राजसी भोजन नहीं वो करना। प्रभु वो अपने लिए करना है, हमें है ना कृष्णा के लिए करना है। तो हमें बेसिकली स्पिरिचुअल डिसिप्लिन फॉलो करना है, ना कि मेटल डिसिप्लिन फॉलो करना है। This and that is an important understanding। जो हमारा डिसिप्लिन है वो स्पिरिचुअल है, बाकी लोगों का डिसिप्लिन मटेरियल है। वो डिसिप्लिन हम क्यों फॉलो कर रहे हैं? हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे बढ़े। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग। इसलिए कभी कभी डिवोटी भी आपको साधारण नॉर्मल आदमी के जैसा लगेगा। वह जल्दी उठ रहा है, रात को जल्दी सो रहा है, सात्विक भोजन कर रहा है, भगवान को भोग लगाया हुआ भोजन कर रहा है, और कोई बहुत ज्यादा लाइफ हाई हाई फाई, लेकिन अंतर अंतर बहुत है, कॉन्शियसनेस का अंतर है दोनों के। राइट? सो बेसिकली वी हैव अंडरस्टूड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट प्लीज डोंट है ना become indisciplined in your life, become very very disciplined, regulated। जल्दी सोना, जल्दी उठना, 16 माला जप करना डेली बेसिस पे, हमें सब चीज़ों के लिए टाइम मिल जाएगा अगर हम लोग प्रॉपरली हमारे उसको रेगुलेटेड लाइफस्टाइल को फॉलो करें। जहाँ पर भी आप अपने ब्रेक करेंगे शेड्यूल को,
तो वहां पर आपके योगो भवति दुख, योग दुख हा नहीं होगा, दुख हो जाएगा, योगो भवति दुख, राइट। सो विद दिस विल फिनिश, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग। एक छोटा सा मैं सर्विस देना चाह रहा था, अगर आप में से कोई करना चाहे, एवरीडे राइटिंग द समरी, बहुत दिन हो गए समरी कोई लिख नहीं रहा है, तो कोई करना चाहेगा आप में से समरी राइटिंग सेवा एवरीडे, जो हम लोग का लेक्चर रहता है उसका? यस, who would like to do? तनिष, आप करना चाहेंगे? ओके, चलिए कोई बात नहीं। So here is a question from Bhuvan to me. Why do we fall even if we chant 16 round reading in lecture? Very nice question. ऐसा क्यों होता है जब 16 माला जप कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, फिर भी फॉल डाउन हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है, हम आगे जोड़ने के बजाय पीछे चलना शुरू कर देते हैं? वो मैंने बताया था, इनफैक्ट डायरेक्टली नहीं बोला, इनडायरेक्टली बोला है कि हम डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहे हैं हमारी लाइफ में, कहीं ना कहीं हमारा डिसिप्लिन में गड़बड़ हो रहा है। देयर मे बी द रीजन ऑफ वैष्णव ऑफेंस आल्सो, वो नहीं है तो हमारा डिसिप्लिन गड़बड़ हो रहा है। तो अगर हमारा डिसिप्लिन लाइफ नहीं रहेगा तो देयर चांसेस ऑफ फॉल डाउन इन दैट केस, क्योंकि कहीं ना कहीं हम हमारी रीडिंग के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देंगे, करेंगे तो खाना पूर्ति जैसा रहेगा। लेक्चर हमें हम हमारे कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देंगे, करेंगे तो उसमें भी खाना पूर्ति जैसा हो जाएगा। मेडिटेट करना, जो हम रीड कर रहे हैं उसके ऊपर मेडिटेट करना है, जो हम लोग हियरिंग कर रहे हैं उसके ऊपर हमें मेडिटेट करना है, राइट। So that's one reason, because we become राजसिक and तामसिक, है ना, बिना डिसिप्लिन के। although we are doing साधना, but वो साधना इतना अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग जो है आउटवर्ड तरीके से कर रहे हैं उसको, मतलब मान लो अपना आप चल रही है, रीडिंग एक मैकेनिकली रीडिंग हो रहा है, हियरिंग भी प्रॉपर्ली है, then the chances of fall down. Then what will be the help of my chanting 16 round at that time? कोई दिक्कत नहीं, chanting is not for mitigating, you can say for creating discipline in the life. Discipline is something which can even come by sattvic lifestyle. तो 16 माला जप करने से भगवान खुश होंगे, धीरे धीरे अज्ञात स्वीकृति बिल्ड होती रहेगी और आपकी बहुत अच्छी भक्ति शुरू हो सकती है। कर्मा बर्न होंगे तो डिसिप्लिन फॉलो करना। 16 राउंड के तो अनगिनत फायदे हैं, दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू चैंट 16 राउंड, अनगिनत फायदे हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स भी इनफैक्ट सॉल्व हो सकती है अगर हम 16 राउंड ठीक से कर लें। इनफैक्ट प्रभुपाद बोलते हैं कि यू नीड नॉट टू डू एनीथिंग एल्स, इवन नॉट रीडिंग आल्सो, इवन नॉट गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग आल्सो, if you are able to chant 16 round properly, you are able to chant 16 round properly, right? तो ये आज का हमारा कंक्लूजन है, become very disciplined and Krishna conscious disciplined person, chanting every day, reading every day, getting up early, attending मंगला, ये चीजें बहुत। ओके, सो हम लोग यहाँ पर फिनिश करते हैं। एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस, यू कैन आस्क।